Chinese companies working in Pakistan's southwestern Balochistan province donated 250,000 US dollars for the flood-affected people of the province. Balochistan is one of the most underdeveloped part of Pakistan, has been devastated by the recent floods. 让我代表我们中业集团公司和在巴的3000多名中巴员工，向洪水遇难的巴方兄弟表示哀悼，向受灾的政府和人民表示诚挚的慰问。ये स्पेशली जो है ये एक बड़ा अच्छा मैसेज बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से जाएगा कि चाइना जो डेवलपमेंट कर रही है बलूचिस्तान में वो फर्दर जो उनके फ्यूचर के लिए जो काम कर रही है, और दूसरी ये है कि डिज़ास्टर की सूरत में इस टाइम जो है हम फेस कर रहे हैं, बलूचिस्तान के लोग सफ़र कर रहे हैं, तो ये भी उनके लिए एक बड़ा अच्छा वो है। स्पेशली जो है हमारे जो कोविड जो हम फेस कर रहे थे, आपको पता है कि बलूचिस्तान हमारा एक बहुत गरीब सूबा है, तो उसके अभी जो है और फर्दर जो है ये कंपनीज जितने भी है हमारे जो इंस्टीट्यूट्स है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर काम कर रही है। Pakistan's National Disaster Management Authority said Thursday evening that at least 256 people were killed and 166 others injured in Balochistan from this season's monsoon rains. According to the NDMA, over 9 million people and 31 districts of the province have been affected by the flooding, while 7,000 people are living in camps.